first of all, Virat, thanks a lot and welcome for doing this chat for Digit. हमारे Thank साथ you. काफी सारे partners, brokers, corporate clients. A lot of these people have joined us who basically have made what Digit is today, and obviously our employees. And जी before we start, let me just tell you what happened with me yesterday. I have a colleague here और मैं उसको बोल रहा था कि आज कल विराट के साथ Fireside Chat record कर रहे हैं. So जी what should I wear? So she said you can wear whatever you want because nobody will be looking at you in the video. So the focus will only be on Virat. So I am also surrounded by colleagues like this. हाँ जी So let me just start by first saying that to be someone who is loved by a 4-year-old kid to a 90-year-old grandmother all across the country and maybe way beyond. So do you ever feel or get comfortable with this sort of a love and adulation, or you always it's a bit difficult to carry this? Very good question. I mean, ऐसा नहीं है कि you don't get used to it. Obviously, you get used to it. But if you ask me whether I'm comfortable with it, I don't think that it has become second nature to me. क्योंकि मैं हमेशा एक ऐसे environment में बड़ा हुआ जहाँ पे things were very, I mean, like a simple middle class environment जो आप सोच सकते हैं जहाँ पे things are very very basic, very simple. वो ही हमारी entertainment के लिए कुछ sports हो गए, अपनी society में आप नीचे जाके खेल रहे हो. So I was always involved and mingled with a lot of people. तो कभी भी मेरा isolated upbringing नहीं रही. तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेवल पे जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं लाइफ में, तो थोड़ा आइसोलेशन नेचुरली हो जाता है. क्योंकि लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन. ऑब्वियसली द लव एंड एडुलेशन ऑफ पीपल इज देयर. along with that comes a lot of attention, comes a lot of demands as well. तो आप कहीं ना कहीं अपने confined space में घुसते चले जाते हैं. तो अभी मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि मतलब अगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ घर पे हूँ या मैं अपने रूम में अकेला हूँ तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता हूँ. लेकिन बाहर निकलते ही जैसे ही मतलब पीपल कम एंड स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद यू, यू कैन सी देयर लव एंड यू अप्रिशिएट इट, बट इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल स्टिल. कि मतलब मुझे अभी भी अगर कोई कैमरा लेके उधर से वीडियो बना रहा है तो इट्स नॉट लाइक आई विल कैरी ऑन डूइंग व्हाटएवर. इट्स स्टिल लाइक टू एन एक्सटेंट आई फील लाइक कि वो मेरे से अभी तक रजिस्टर नहीं होती चीज नेचुरली, इफ आई कैन पुट इट दैट वे. जी. I hope you stay like that always. Thank you. So, Virat, I think a question relating to this is, and it is true for everyone, most people start at a basic level. And people say कि IIT में जाना है तो 10,000 में से एक का सिलेक्शन होता है. इंडियन क्रिकेट टीम में तो 1 करोड़ में से 1 करोड़ पीपल एस्पायर, उसमें से एक guy would make it to the Indian cricket team. So when you were young and you were playing, how do you retain that focus on something which is so competitive and so much uncertainty that I would actually be able to make it to the cricket team, leave alone being a captain? So how do you keep a sense of such an aspiration and keep working towards it? काफी मतलब अगर now when I look back at things तो मुझे ऐसा लगता है कि I have been very very fortunate. मतलब अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि जहाँ पे मैं आ गया हूँ मैंने सब कुछ कर लिया, तो I think that is not accurate because it can only happen with a lot of blessings on you, a lot of grace showered on you as a human being along with your hard work. Obviously जब आपके पास कुछ भी लेवल का टैलेंट आपके पास प्रेजेंट किया गया हो ऊपर वाले की तरफ से, तो आई थिंक उसमें हार्ड वर्क फिर उसका मेन इंग्रेडिएंट बन जाता है कि आप उसको कितना निखार सकते हैं, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को, ताकि आप उस टैलेंट को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज करें जिससे लोग इंस्पायर हो सके. भले ही मेरे प्रोफेशन में आज की डेट में टीवी पे देख सकते हैं लोग, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में भी अगर आप उस स्टेज तक पहुंच जाएं जहाँ पे आप एक ऐसी प्रोमिनेंट पोजीशन में हैं जहाँ आप एक कल्चर ड्राइव कर रहे हैं, एक चेंज को ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके आसपास भले वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस में हो या ना हो,
लेकिन आप इम्पैक्ट जरूर कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों के ऊपर। तो अभी मुझे इतने सालों में ये चीज धीरे धीरे समझ आने लगी कि पहले आप सोचते हैं हाँ मैंने किया, मेरी मेहनत थी, बट बहुत लोग मेहनत करते हैं और मे बी आपसे थोड़ी ज्यादा भी करते होंगे, एट डिफरेंट स्टेजेस। तो आपके ऊपर डेफिनेटली ब्लेसिंग्स रहती हैं ऊपर वाले की, कि आप अपनी अपनी फील्ड में अगर आगे जा पा रहे हैं, तो आई थिंक वो जरूरी है। ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है, और उसके साथ आपकी मेहनत का कोई लिमिट नहीं आप सेट कर सकते फिर। यू कांट पुट लिमिट्स टू योर हार्ड वर्क देन, बिकॉज यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड यू नेवर फील लाइक आई डिजर्व ऑल ऑफ दिस एंड यू स्टॉप वर्किंग हार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आपका फोकस एक जगह में रहे और आप उसमें पूरी मेहनत करें, तो आगे जाने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं, इन माय ओपिनियन। या नो एब्सोल्युटली, आई थिंक अपने हाथ में तो हार्ड वर्क ही है। आई थिंक बाकी सब तो जी इफ सर्कमस्टेंसेस कम देन थिंग्स विल कम. Now the next जी thing is that as you get into the cricket team in the initial stages, you already have a lot of stalwarts. No, Sachin Tendulkar bhi hai, and Dhoni bhi hai, and Rahul Dravid bhi hai. So in such a, and similarly, I think when you are around now, a lot of youngsters are coming up. So how do you maintain your own individuality at the same time when you're surrounded by such big guys? And something similar happens in business also, that somebody comes at an early stage of a career and जी then थोड़ा जी आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द क्वेश्चन कंप्लीटली, क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है व्हेन आई एंटर्ड दैट एनवायरनमेंट, कि जिन लोगों को आपने टीवी पे देखा, आप उनसे इंस्पायर हुए, आज उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम में हैं, तो एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है उस चीज का। आई वुड से दैट आज की क्रिकेट में maybe that impact is not as prominent as it was before, because हम लोग कोई आईपीएल वगैरह नहीं खेल पाते थे किसी के साथ। तो हमारे लिए तो सीधा अंडर 19 क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट का जंप वाज समथिंग अनबिलीवेबल, सो वी वर क्वाइट ओवरऑड। आजकल के यंगस्टर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज दे ऑलरेडी परफॉर्म इन दीज प्लेटफॉर्म्स विद platform. वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सो it's a very different scenario and they keep meeting us as well through the year, whether they are part of the team or not। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था कि आई वॉज क्वाइट इंटिमिडेटेड, आई वॉज क्वाइट नर्वस, बट इवेंचुअली यू रियलाइज कि एवरीवन मेक्स यू फील कंफर्टेबल। उसमें फिर आप जब आपको, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको किस तरीके से वेलकम किया जाता है। तो अगर आपका वेलकम अच्छा है, तो वहां से आपका जो है कि हेजिटेशन है वो निकल जाती है। फिर आप एज एन इंडिविजुअल जो आपको करना है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। तो आप हमेशा ये नहीं देखते कि यार इनकी स्किल लेवल तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है, मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा। जब आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं, तो फिर आप बोलते हैं अच्छा, यू नो दे आर एक्चुअली pretty normal human beings who have done so well for so long that they've inspired people। और उसके बाहर उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया कि आप एज अ यंगस्टर जाके अपने आप को, अपनी अपनी स्किल्स को और होन कर सकते हैं और शार्पन कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ। ऑब्वियसली कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे काफी ऐसी चीजें होती थी कि मतलब हमें एक लेवल पे तो लगता था यार जाके कुछ बोले या ना बोले, जब कोई मन में आती है मजाक करने की चीज, या कि यार बोल सकते हैं कि नहीं, हो तो इतने सीनियर है कि बुरा ना मान जाए, वो वाली फीलिंग आती थी। तो अभी अभी वो आई थिंक इतनी फीलिंग नहीं है प्रोमिनेंट, बिकॉज हम लोग खुद ही इतनी हंसी मजाक करते रहते हैं यंगस्टर्स के साथ। तो थिंग्स आर अ बिट मोर डिफरेंट नाउ, एज आई सेड आल्सो आईपीएल एंड प्लेइंग रेगुलरली थ्रू द ईयर आपस में, तो दैट आल्सो मेक्स अ Makes डिफरेंस। difference. No, I think it's a great point from our side also. We have to ensure in a company that we are able to embrace youngsters and give them a जी chance to be their own self. Now the जी next thing is, which is true I think in business and for all of us, कि हम लोग 10 साल 15 साल काम करते हैं, हमको लगता है अब तो सब कुछ आता है, अब तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. But even for somebody like you, when people say कि is world's best batsman, so how do you really take inputs for your improvement from the coaches? How do you handle criticism? And how do you keep telling yourself that I still have a long way to go? I still have to improve. आई थिंक उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी
way of doing business या way of conducting operations, if you have more responsibility, आपको पता है कि आपका विजन थोड़ा अलग हो सकता है, आप चीजों को अलग तरीके से देख सकते हैं, तो यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। तो अगर मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी गेम वहां पे नहीं है जहां होनी चाहिए, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि कोई मुझे पुश करे प्रैक्टिस करने के लिए या अपनी स्किल्स पे काम करने के लिए। तो आई थिंक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। और कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं और कई इनपुट्स ऐसे आते हैं जहां पे पीपल समहाउ वांट टू टेल यू व्हाट टू डू, सो दैट दे कैन समहाउ बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस और दैट जर्नी। तो वहां पे चीजों को सेग्रीगेट करना कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, कि आई एम फाइन फॉर नाउ एंड आई विल रीच आउट फॉर हेल्प। I think these kind of things are very important. Communication is the most important thing. Obviously, you can't just cut someone off saying I don't need your point of view, or मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए या मुझे ज्यादा इनपुट नहीं चाहिए। So you respectfully say I'm feeling in a good space and I think things are working well, and I'm taking responsibility of what I'm doing. And if there's help to be taken, I will definitely reach out to you, and I would appreciate your support. I think that kind of a balance has always worked well for me. But first and foremost, कोई भी चेंज लाने के लिए, किसी भी चीज में इम्प्रूव करने के लिए, आपकी खुद की विल होनी बहुत जरूरी है। ये तो मतलब मेरा हमेशा एक्सपीरियंस रहा है कि चेंजेस जो आप अपने अंदर से एक आवाज आती है उससे जो चेंजेस होते हैं, those changes are way more impactful than someone else coming in telling you you're doing something wrong. Because I would rather get to a stage where I'm not accepting a lot of things, I'm not accepting a lot of things, but it breaks me to an extent that I have no choice but to accept. Because वहां से फिर there's only one way which is upward, so I can start building again. वो बीच की situation में I would rather fail on my terms than try to succeed with someone else's vision, if that makes sense. So that gives you total responsibility of what you're doing, and there is no regret afterwards कि हाँ, ये मेरा डिसीजन था। किसी और की सुन के अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको एक और इंसान मिल जाएगा ब्लेम करने को। तो आई डोंट थिंक वो किसी भी वे में कंस्ट्रक्टिव है। बट एट द सेम टाइम सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, दैट वन कैन क्रिटिकली लुक एट वन सेल्फ ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप से ऑनेस्ट होना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई वाज सेइंग कि बिजनेस में करीब 40-50 साल से प्रोफेसर्स बोलते हैं कि a culture is more important in a company than the strategy. In fact, they say that culture eats strategy for breakfast every day. So India की जो टीम का कल्चर है, I think that has also undergone a very big change in the last few years. मेरे को ध्यान है हम लोग जब कॉलेज टाइम में दिल्ली में मैचेस देखते थे, और इंडिया में तो एवरी व्यूअर इज एन एक्सपर्ट, हम भी अपने आप को एकदम एक्सपर्ट समझते थे। टीम में 11 में से एक बहुत अच्छा फील्डर होता था, 2 एवरेज होते थे, बाकी तो बिलो एवरेज होते थे। जहां आज 3 रन लेते हैं, उस समय 1 रन या ज्यादा से ज्यादा कोई 2 रन ले लेता था। सो फिटनेस पे बड़ा फोकस है। आई थिंक द होल आइडिया ऑफ गोइंग आउट एंड सेइंग वी आर हियर टू विन, वी आर नॉट प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ, idea to bounce back. So what all happens in a cricket team which is always under constant criticism and scrutiny, and how easy or difficult it is to change that culture? Culture is a very difficult thing to change, but I think India में मैंने ये experience किया है कि not just in the field of sport but in any field, I think the most important thing is to set the culture from the top, and everything then trickles down. So that is the way things have always had the most impact in our societies, and I've seen that impact from the top leadership. If the right example is set, then everyone finds confidence and assurance in following that. So when I became the captain of the team, मेरा फोकस भी सोलली सिर्फ कल्चरल चेंज पे ही था, क्योंकि मुझे पता था कि स्किल में हमारी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इंडिया में जितने स्किल्ड प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं वो शायद दुनिया में इतने लंबे समय तक कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हुए, और होते ही चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना अबंडेंट टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट का पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि अगर आप आज डिजिट की बात कर रहे हैं कि ना ही सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली हम एक
one of the largest insurance companies कैसे बन सकते हैं हम. That is the main goal. तो मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपना जो एक विजन है उसको कन्फाइन ना करें, और विजन को एक्सपैंड करने के लिए आपको कल्चर चाहिए. क्योंकि आपका कन्फाइंड विजन, आपको 6 महीने का आप गोल ले सकते हैं और बोल सकते हैं चलो 6 महीने में हम ये अचीव कर लेंगे, उसके बाद क्या, 7वें महीने से आपकी मेहनत बंद नहीं हो सकती. लेकिन अगर आपका कल्चर है, तो कल्चर रिक्वायर्स यू टू वर्क हार्ड एवरी डे, बिकॉज देयर ऑलवेज समथिंग दैट माइट बी लैकिंग. सो इफ यू सेट आउट some goals in a cultural environment and you say हम सब लोग 15 से 20 मिनट रोज एक तरीके की स्लिप कैचिंग प्रैक्टिस करेंगे, या हर हर प्लेयर 20 मिनट की ये जरूर ड्रिल करेगा. अगर वो रुक जाती है तो मतलब कल्चर फॉलो नहीं हो पा रहा. तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि वो जो गोल्स हैं, वो जो एक 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 जो एक माहौल बन जाता है, उसमें आपको पता है कि अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हमारा चांस ऑफ सक्सेस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं. और यही प्रोसेस हमें काम आएगा डे इन डे आउट, वेदर आप 6 महीने खेलें या 12 महीने खेलें या 6 साल खेलें. कल्चर इज, आई टोटली अग्री, कल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेटेजी. बिकॉज अगर आप क्रिकेट की अगर बात करें आप, तो मोर और लेस फील्ड पोजीशंस और ये सब तो मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सबको होती है, बट आई थिंक एज अ कैप्टन my focus was more on the leadership side of things, that I have to try and bring in this culture and change the mindset of anything is possible, we can win from any situation. एक बार वो अचीव हो गया तो फिर तो क्रिकेट आप बचपन से खेल रहे हो तो आपको पता है गेम में क्या होना है, ये ऑफ साइड है, ऑन साइड है, यहाँ पे ये फील्डर्स होते हैं, यहाँ पे ये होता है, बॉलर ये करने की कोशिश कर रहा है. तो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट in executing those strategies, where is your belief? That was my focus. कि अगर आप दोपहर में भाग के बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको बिलीफ होना चाहिए कि मैं यहाँ पे 2-3 विकेट ले सकता हूँ और मैच हम जीत सकते हैं. या एज अ बैट्समैन आपको बिलीफ होना चाहिए कि मैं किसी भी सिचुएशन से मैच जिता सकता हूँ. तब आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो और सक्सेसफुल हो सकती है. तो आई थिंक कल्चर इज डेफिनेटली मोर long lasting and a more impactful factor in any team environment, whether it's business or sport, especially cricket. No, I think a very relevant point, and same is true for business also, that if we continue to work, to make the business better and actually believe कि हम ये कर सकते हैं, the first one has to win in one's own mind. Only then you can go out and win in the market or on the field. Correct. So great point, Virat. Now, I would say, I have played also sports, but maybe if you are at 100, I would have played at a level of 2. But one thing which I always have learned, and I think what even today fascinates me, कि जैसे अभी आपने अभी you said कि look, I will no longer take the captaincy of T20 format, and आपसे पहले I think Dhoni had got out, and prior to that Sachin Tendulkar. So captains who are very successful, they themselves say कि okay, I think I'll give this up and I'll only focus now on being a batsman or a bowler. In a corporate world, this is like impossible कि कोई बोले यार मैं CEO हूँ, but अभी मेरे से better लोग आ रहे हैं, I think उनको opportunity मिलनी चाहिए, and I'll focus on some other role. So how easy or difficult is to actually accept this sort of a change? And we see this happening on a continuous basis. See, I think firstly you need to have a complete understanding of what you set out to do and whether you achieve those targets or not. Because आप एक कंपनी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कंपनी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहना, एक सीईओ की पोजीशन में इन्वॉल्व रहना एक बहुत डिफरेंट तरीके की स्किल है. आप सिर्फ उस स्किल के लिए काम कर रहे हैं. तो अगर आप बोलने लगे कि आप एक सीईओ भी हैं और मार्केटिंग हेड भी आपको बना दिया जाए और आप डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ. माय स्ट्रेंथ इज बीइंग द सीईओ, and I am taking an added responsibility of probably being the marketing head as well, but my strength is being a CEO. So if I have 2 jobs and I know that yes, I have great marketing ideas and I think I can contribute to the culture of the company and take the company to the next level, but after a point when you feel like me being a CEO is actually what brings more value to the company, and I'm not able to completely fulfill that responsibility, and that is of more value, I feel,
Hmm. So you will any day want to strike that right balance, and to understand that everything has a tenure and a time period. So That's you obviously have to be aware of that. So from people's point of view, it might feel like यार इसने क्या कर दिया, but hmm. आपको अंदर अपने अपने अंदर हमेशा पता होता है कि यार when you think of moving forward and achieving more, you feel like you've done your job. And now, as a batsman, maybe you have more things to contribute to the team. You can make the team win more. So, take pride in that. Still being a leader, you don't need to be a captain to be a leader. It's as simple as that. When MS Dhoni was in the team, it's not like he wasn't a leader. He was still the guy that we were constantly going to have inputs. But for him to understand that, yes, it is a natural progression and a natural time for me to take over and take Indian cricket forward to a level that I wanted to. And as long as I feel that I have done that job without having materialistic goals, as I said, that's a longer lasting effect, because to win or not win is not in your hands, but the striving for excellence and the will to work hard and to be better every day is something that you cannot do short term. If it becomes a culture, then it lasts beyond your responsibilities and beyond your playing years as well. No, makes I think a lot of sense, Virat, because if one is thinking more from a team or a company perspective, and also one's own that what I can do more now, then I think giving it up becomes relatively easier and obviously much more valuable to the team, and same in the company. I hope in this all of us in corporate life can learn from you, and at least I, whenever the time comes, I hope not too earlier, I can also say that no, I need to move on and maybe do something else, pick up something I low. think also to add to that, moving on and taking that decision is also a part of leadership. Yeah. I feel, to understand the right time to do it, and to understand that maybe the environment needs a different direction, obviously with the same cultural values, but a fresh set of ideas to inspire people in a different way, to boost them, to motivate them in a different way, and you continue to contribute in a different manner, but to the same goals, to the same vision of the team. So I think one has to embrace all kinds of roles and opportunities. In my personal experience, I played under MS Dhoni as a player, and I have been the captain of the team for a long time. Okay. My mindset has been same in both situations. Hmm. I always thought like a captain, even when I was just a player. That I want to make the team win. I have to be my own leader. So Yeah. as long as people become that within a team environment, then a lot of major things are taken care of in any case. Yeah, no, absolutely correct. And great answers, Virat. I'll maybe just two now very quick questions, slightly different from cricket and from corporate life. So one is Hmm. that now you have become a father of a wonderful daughter. Has in your mind something changed about how you look at the world of financial services, insurance, etc., or you're still as carefree, or that hasn't really changed at all? No, matlab, I wouldn't say it hasn't changed. We have had conversations of opening an account for Vamika, Hmm. what the future holds, how we want her future to take shape, what are the things that we can provide for her. Obviously, ensuring yourself as a family is probably the most basic and the most important thing, Hmm. because anything can happen at any time. And I think especially more so when you have a kid, I totally understand and agree with you that your point of view completely changes. Then you're not just thinking about, oh, we are two individuals, we are two successful individuals, on our own. But Absolutely. when you have a family, then you obviously the vision becomes much larger. So and you start thinking about what can we do for our child, how can we make sure that everything is streamlined, everything is safe and secure, and still allowing them to obviously go on in life and take risks and make mistakes and carve their own path. But I think that level of insurance and that level of security and that one layer of security is absolutely
crucial, I think, for any family structure, and we are no different. So the last question is, Virat, I think we met 2 years back जब आपसे digit में investment का discussion कर रहे थे, and I still tell people that no, I always saw you on the field as a very aggressive, focused guy. I said one to one, you are very focused, but you are very gentle and polite. But at the same time, you asked some very relevant questions, which I thought was very interesting, coming from someone who would have very little time to look at some of this. So, personally, for you, what were you expecting from Digit at that time? And 2 years now, would you say it was a good decision, bad decision? Should have invested more? Should not have invested? That I've thought about that. If I have to be very honest, look, I mean, that was probably our meeting, and our deal was probably one of the first of the kind that I've done. Where I have come on board, and your model was absolutely brilliant, but for it to come to life and eventually take shape like it has today, I would not have envisioned it. Obviously, you knew inside out what was happening, but from my position, I did not have complete understanding of how this is going to take shape. But if you talk about expectations, as I said, right now I'm sitting here thinking, why didn't I invest more, to be honest? Because obviously everyone, when I got the first feedback and the report, I was like, I could not imagine it propping up so quickly and move in such a rapid pace in upwards direction. I was completely amazed and so proud, also so happy and proud that I was able to, having an association and contributing it to a different way, which is related to growth, is a very different sense of satisfaction and sense of accomplishment, because you feel like, yeah, you are also invested in the brand. At the same time, you are the face of it, and you are helping that growth happen. For me, that gave me much more satisfaction, to be honest, and I absolutely love that everything just came together so nicely, and things moved on so well. So I felt like, my contribution was of some significance to the brand, and which I feel very proud about. No, thanks a lot. And all of us here in Digit Virat also feel absolutely take a lot of pride and happiness in not only having you as a investor or shareholder, but also as our face. And I hope and pray this association goes lifelong. And no, we have even more opportunities to associate Yes, with each other. So thanks a lot for that confidence, and I hope we always do better than what you expect us to do. And absolutely. yes, and you will. I think you've started seeing contribution from you in the last few months, and I think I'm sure next year you will really take the Digit brand, and more importantly, this message of simplicity of insurance to every nook and Yeah, corner of the country, which I think is really absolutely. important. Absolutely, we will. So thanks a lot, Virat. Best of luck to you, your Thank you. family, in Thank whatever you, you Kamesh. do. Thanks a lot. Thank you so much. Great to talk to you. Thank you. Thanks, Virat. So I Bye. hope, Bye. Virat, this wasn't too taxing for you. Not at all, yeah. It was very relaxed, very chilled out. Yeah. No, thanks a lot. I Very, think, very. as I said, a bit of a inspiration. It will definitely work, and we will also work on the messages a bit more clearly. Perfect. Perfect. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Take care. You too. Bye. 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 Bye.